Assalamu alaikum my dear students. Welcome in online biology class. Hope you all are fine and well acquainted with the completed part and preparing yourself for your board exam. So as we have started with the chapter Enhancement of Food Production, and I think 2 or 3 video lectures already I have delivered to you people. So it is again in continuation with that chapter only. So here we are dealing with the use of microbes in different areas. So I have already discussed with you people about the reduced syllabus. तो ये reduce part है आपके chapter का, यानी ये part आपको इस chapter में नहीं पढ़ना है और इस part पे questions नहीं आएंगे. So let's come to the today's topic. Today we are going to deal with microbes in sewage treatment. आपने अक्सर देखा होगा कि microbes का इस्तेमाल different areas में किया जाता है, तो उन्हीं में से एक हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, that is the sewage treatment. Now what is that sewage? First of all you have to see. Many time you came across such kind of view. आप मे बी ट्रेन से जाते हुए साइडवेज पे और ट्रैक के बाजू में जो लार्ज एरिया होता है वहाँ पे आपको ऐसे प्लांट्स नज़र आए होंगे. सो इट इज़ अ सीवेज प्लांट एंड सीवेज इज़ अ मैटर कैरिड ऑफ इन ड्रेनेज. It is a municipal waste containing human excreta, household waste, dissolved organic matter and even pathogenic microbes, that is bacteria, viruses, protozoans, nematodes and microfungi. It also include discharge water from hospital, waste, slaughterhouse, waste animal dung, etc. So discharge from industrial waste that contains toxic dissolved organic and inorganic chemicals, or tannery or pharmaceutical waste, etc. They get also add to the sewage. So here some extra information also I have to give about the sewage. It is also a potential source of pathogenic bacteria, viruses and protozoa. The causative agent of dysentery, cholera, typhoid, polio and infectious hepatitis may occur in sewage. So the bacteria from the soil are also present in the sewage. So during the course of time, if that water will get decomposed, or initially aerobic and facultative anaerobic organism predominate, which are then followed by strict anaerobic, especially methanogenic bacteria that produce methane and carbon dioxide. So here we can say that the sewage water is also useful in the production of biogas. So about biogas in next lecture inshallah I'll going to explain you people. Now let's talk about the composition of sewage. Sewage consists of approximately 99.5% to 99% water and 0.1 to 0.5% inorganic and organic matter in suspended and soluble form. Composition of sewage varies depending upon the type of waste discharged into water from different industries like textile, chemical, pharmaceuticals, dairy, canning, brewing, meat packing, tannery, oil refining and meat industries, etc. So non-pathogenic bacteria and other organic particles are also present in the wastewater or sewage, we can say. Inorganic particles such as sand, grit, metal particles and ceramic particles, etc. are a part of this wastewater, we can say. Organic particles में हम बहुत सारी चीज़ें जैसे कि humus, etc. और feces और hair, food और different kind of organic substances हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अंदर मौजूद होता है. And in that pathogens such as bacteria, viruses, prions and parasite worm, etc. are also a composition of wastewater or sewage water. Now we will see what are the different microorganisms present in sewage. So various type of microorganisms are present in sewage like bacteria, viruses, fungi, protozoa, nematodes, algae, etc.
they are present in sewage. However, their numbers and type fluctuate depending upon the sewage composition and source of sewage. Raw sewage may contain millions of bacteria per ml. These include coliforms, fecal streptococci, anaerobic spore-forming bacilli, and other types of originating in the intestinal tract of humans. So before wastewater is made available for human use, we can say it has to be treated properly so as to remove such kind of organic matter, inorganic salt and pathogens as well. So that is the reason ये सारे जो बैक्टीरियाज और जो डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद होते हैं सीवेज के अंदर, तो बिफोर इट इज़ सप्लाई फॉर ह्यूमन यूज़ इट नीड टू बी रिमूव्ड. सो दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है. Now if we will talk about the characteristic of sewage, तो उसका composition जैसे कि हमने पढ़ा उसमें 99% वाटर होता है, some solid debris जिसमें कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक चीज़ें जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसके अंदर मौजूद होते हैं. एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है इट इज़ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज़ द फिजिकल, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल. लाइक कि उसमें कुछ फिजिकल सब्सटेंसेस होंगे, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होंगे एंड सम काइंड ऑफ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट इन दैट. तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सीवेज की, ये सारी मिलके उसको कुछ हद तक इतना यूजलेस बना देती हैं दैट वी कैन नॉट यूज़ इट बिफोर ट्रीटमेंट. सो दैट इज़ द रीज़न सीवेज का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है. एंड हियर वी विल डिस्कस सम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर सो दैट वी कैन अवेलेबल इट टू द ह्यूमन बीइंग फॉर इट्स यूज पर्पज़. So first we will see the importance of sewage water treatment plant. Sewage treatment is the process of removing contaminants from wastewater and household sewage, both effluents and domestic. It includes physical, chemical and biological process. Just now I said like that, to remove physical, chemical and biological contaminants. So its objective is to produce an environmentally safe fluid waste stream and a solid waste suitable for disposal or reuse. The objective of sewage treatment is to produce a disposable effluent without causing harm to the surrounding environment and to prevent pollution. So major हमारा जो यहाँ पे एम और ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज़ टू अवॉइड पोल्यूशन, और पोल्यूशन को जिस हद तक कम किया जा सके उतना हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड्स. बिकॉज अगर ऐसे ही कंटामिनेटेड वाटर और हमने देखा कि कंपोजिशन उसका कितना ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर बेस्ड करता है, तो ऐसे ही अगर ये इफ्लुएंट पड़ा रहा, ये ऐसे ही अगर ह्यूमन यूज्ड में आ गया तो इट मे कॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिजास्टर वी कैन से. सो दैट इज़ द रीज़न पोल्यूशन से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, लाइफ को सेव करने के लिए इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर. First we will talk about the preliminary treatment. In this treatment the waste or the sewage water collected from the different sources, जो sources अभी हम लोगों ने देखे हैं, तो वो सारे sources से when the water is collected, first it has to overcome with certain steps we can say. तो preliminary treatment में पहले वो steps होती हैं, तो यहाँ पे 2 steps हम लोगों को देखनी है, that is screening and grit chamber. तो जब ये effluent ये 2 steps से आगे जाते हैं then उसके बाद उसका primary treatment start होता है. तो सबसे पहले उसका हम लोग यहाँ पे pre treatment देखेंगे, that is the preliminary treatment. So pre-treatment of wastewater required in almost all places except few. Pre-treatment of water means removing the floating materials from the wastewater. आपने देखा है कि जब बहुत सारा एक साथ जब सीवेज कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारा डेब्रिज उसके अंदर फ्लोटिंग भी होता है, तो दैट इज़ द रीज़न उसका प्री ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है. सो दिस ट्रीटमेंट इंक्लूड्स रिमूविंग ऑफ फ्लोटिंग मटीरियल्स बाय बार्स एंड स्क्रीनिंग. सो दैट इट सेल्फ इज़ द फर्स्ट मेथड वी कैन से. सो इट इंक्लूड्स द 2 methods as I said. फर्स्ट वन इज़ स्क्रीनिंग एंड सेकेंड वन इज़ द ग्रीक चैम्बर. तो हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे स्क्रीनिंग देख लेते हैं. सो सीवेज एंड वेस्ट वाटर कंटेन्स प्लेंटी ऑफ सस्पेंडेड फ्लोटिंग मटीरियल्स, कोर्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स along with dissolved substances. So the substances objects are filtered and removed. This is done in screening chambers.
The sewage is passed through screens or net in the chambers. Large suspended or floating objects are held back in the screening chamber. So these have to be removed before the biological treatment. जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे hurdles और we can say the large debris or floating objects are also present in that sewage water. तो screening यानी कि ऐसे bars उसके अंदर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वहीं पे उसको रोक लिया जाता है before it go for the next step. Then उसके बाद बारी आती है ग्रिड चेंबर की. आफ्टर स्क्रीनिंग द फिल्टर्ड सीवेज इज देन पास्ड इनटू द सीरीज ऑफ ग्रिड चेंबर्स. These chambers contain large stones, we can say pebbles and brick blast और कोर्स पार्टिकल वी कैन से. तो यहाँ पे कोर्स पार्टिकल जो होते हैं दे गेट सेटल डाउन बाय ग्रेविटी. दस passage of filtered sewage remove much of the कोर्स पार्टिकल मैटर. या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ब्रिक के या कोर्स पार्टिकल जो होते हैं जो स्क्रीनिंग चैम्बर से भी पास आउट हो जाते हैं बट वो वहाँ पे फिर भी उस पानी में और उस सीवेज में मौजूद होते हैं. तो इस वजह से ग्रिड चैम्बर के थ्रू जब उसको पास किया जाता है तो वहाँ पे उसके अंदर जितने भी पेबल्स और ब्रिक ब्लास्ट होते हैं और कोर पार्टिकल होते हैं तो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो वहाँ पे सेटल हो जाएंगे. एंड नाउ आवर वाटर इज रेडी टू ओवरकम और टू अंडरगो द प्राइमरी ट्रीटमेंट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिजिकल treatment. So as we have seen, basically the objective of preliminary treatment is the removal of coarse, solid and other large materials that is found in raw wastewater, we can say. And this preliminary treatment operates typically include coarse screening, dirt removal and in some cases communication of large object, we can say. So in dirt chamber, the velocity of the water through the chamber is maintained sufficiently high or air is used so as to prevent the settling of most organic solids. सो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के थ्रू वाटर को प्रिपेयर किया जाता है सो दैट इट मे गेट रिड अवे ऑफ सेवरल काइंड ऑफ डेब्रिसेस और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट वी कैन से. एंड नाउ इट इज़ रेडी टू पास थ्रू द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट. अभी प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है एंड देन इट इज़ रेडी फॉर द प्राइमरी ट्रीटमेंट. सो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ द एक्चुअल ट्रीटमेंट वी कैन से. सो आफ्टर द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट द सीवेज वाटर इज पम्प्ड इनटू द प्रिलिमिनरी सेडिमेंटेशन टैंक. जैसे कि आप देख सकते हो उस तरीके की टैंक होती है जिसको सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं. एंड हियर वी कैन से हियर द ऑब्जेक्टिव इज in making the wastewater or sewage compatible for secondary or biological treatment. Because in case sewage primary treatment involves clarification and removal of suspended solid, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, it involves generation of primary sludge और we can say जो actual content होता है वो इसी sludge में होता है. Often sludge stabilization is also an objective of primary treatment unit. यूजुअली यूज्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट जो वो लोग वहाँ पे जो काम करते हैं दैट इज सेडिमेंटेशन और सेटलिंग टैंक और क्लैरिफायर्स वी कैन से. देन सेप्टिक टैंक्स एंड इमॉफ्स टैंक्स या हम लोग उसको एनारोबिक पॉन्ड्स भी बोल सकते हैं. तो इस तरीके से जो है वो चैम्बर्स प्रिपेयर किए जाते हैं एरोबिक प्रिपरेशन के लिए. सो द सेडिमेंटेशन ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर अकर्स इन दिस टैंक. About 50 to 70% of the solid settle down and there is a reduction of about 30 to 40% in number we can say of coliform organism. So the organic matter which is settled down is called primary sludge, which is removed by mechanically operated devices. And the supernatant or effluent we can say in the primary sedimentation tank still contains large amount of dissolved organic matter and microorganisms which can then be removed by the secondary treatment. तो primary treatment में basically यहाँ पे जो sedimentation tank होता है वहाँ पर basic 50 to 70% का वहाँ पे काम किया जाता है and जो floating और the primary sludge जो होता है उसको remove किया जाता है mechanical device से. but still ये जो अभी सीवेज है इट इज़ नॉट सेफ फॉर यूज़. सो दैट इज़ द रीज़न इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट से फिर पास किया जाता है सो दैट वहाँ पे उसके ऊपर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाए. बिकॉज प्राइमरी ट्रीटमेंट वॉज फिजिकल ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट.
As I said, that secondary treatment is a biological treatment, means here the biological agents are going to add in the sewage water, और we can say यहाँ पे जो अभी हमको sediment मिला है इन दैट, और स्लज वी कैन से, तो इस स्लज में बायोलॉजिकल एजेंट जिसको फ्लॉक्स कहा जाता है, फ्लॉक्स आर द मास ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो ऐड किए जाते हैं इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस. सो इट यूटिलाइजेज बैक्टीरिया एंड एल्गी टू मेटाबोलाइज ऑर्गेनिक मैटर इन द वेस्ट वाटर, और वी कैन से दैट सेकेंडरी ट्रीटमेंट अकर ऑन द ट्रिकलिंग फिल्टर, हम लोग जिसको बोल सकते हैं, जहाँ पे वाटर को पास किया जाता है एंड देन इट इज पास थ्रू द एरेशन टैंक, एंड हियर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, मतलब उसको कंटिन्यू मिक्स किया जाता है, हिलाया जाता है. एजिटेशन का मतलब होता है मैकेनिकली एजिटेशन होता है, एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट. So aerobic bacteria grow vigorously and it forms a flocks. As I said, flocks are the masses of the bacteria held together by slime and fungal hyphae to form mesh-like masses. So these aerobic microbes consumes the major part of the organic matter present in the effluent as they grow. So due to this, the BOD, that is the biological oxygen demand of the effluent is significantly reduced. तो जैसे ही BOD उसका reduce हो जाता है, वो water में toxic substances का level भी जो है वो कम हो जाएगा, and here we can say it is ready to pass to the next stage, that is the tertiary treatment. So by observing this pic what I have kept on screen, so I think आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है सीवेज का. कैसे पहले स्क्रीनिंग होती है थ्रू द बार्स, एंड देन ग्रिड चेम्बर के थ्रू जो डेब्रिज होता है उसको सेटल किया जाता है, एंड देन उसको सेटलिंग टैंक के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, एंड देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट वहाँ पे उसका शुरू होता है, जहाँ पे एरेशन टैंक एंड सेटलिंग टैंक अपना काम करते हैं. तो जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज होते हैं और उसको किल किया जाता है, एंड देन उसके बाद उसको टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है. सो आई होप ये पूरा स्टेप आप लोगों को बहुत अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा. सो लेट्स मूव टू दी टर्शरी ट्रीटमेंट. So once the BOD, that is the biological oxygen demand of wastewater is reduced, it is passed into a settling tank. Here the bacterial flocks are allowed to sediment. The sediment is now called activated sludge. So small part of this is passed back into the aeration tank, and the major part is pumped into the large tank called anaerobic sludge digester. So in this tank, anaerobic bacteria grow and digest the bacteria and fungi in the sludge. So during this anaerobic digestion, gases such as methane, hydrogen sulfide, carbon dioxide, etc. are produced, and effluents from these plants or the digester after chlorination are released into the natural water bodies like rivers and stream. So इस तरीके से chlorination का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू the pathogenic bacteria get killed and the digested sludge is then disposed. So it is a ray diagram that is given in your textbook, and because of this in a glance you will be able to understand the complete waste water treatment. तो आप देख सकते हो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम होता है. पहले प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है टू रिमूव द हैवी सॉलिड्स, देन उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स को निकाला जाता है, एंड देन उसके बाद वहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, एंड देन उसके बाद टर्शरी ट्रीटमेंट होता है, सो दैट वहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज मिल पाए, एंड देन उसके बाद उसमें से एरोबिक बैक्टीरियाज एंड एनारोबिक बैक्टीरियाज अपना काम करते हैं, एंड देन उसके बाद जो स्लज होता है उसको डिस्पोजल के लिए भेज दिया जाता है. तो कंप्लीटली आपको इन अ ग्लांस ये पूरा सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा. आई होप सो. सो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे. ये एक्चुअली थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा ड्राई है आई कैन से, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट ही यहाँ पे एट अ टाइम डिस्कस करेंगे. एट अ टाइम एक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. सो टुडे आई हैव डिस्कस विथ यू पीपल अबाउट द माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. Then next time when I will come with my next video, so there we will talk about microbes in enzyme generation, जहाँ पे हम लोग बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, that what are the different organisms that can produce or that can help to
प्रोड्यूस द बायोगैस, एंड उसके बाद उसमें कौन से स्टेप्स हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो टिल दैट योर वर्क इज़ टू रीड आउट द कंप्लीटेड पार्ट, ट्राई टू फाइंड आउट योर डाउट्स. वेरी इजी आई थिंक सो इट इज़, क्योंकि आप एक बार रीड करोगे तो ही सिंपली यहाँ पे समझ में आ जाएगा. आपको बस उसके प्रपोर्शंस और बैक्टीरिया के नाम यहाँ पे जो एक आध दिए हुए हैं बीच में, उतना आपको सिर्फ याद रखना है. रेस्ट ऑल थिंग्स आप लोग ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की गई है. तो सिंपली आपको इसको रीड करना है. ट्राई टू understand the concept by reading, and still if you'll be having the doubt, so you can contact me. Okay, so till that you just go through the completed part, and inshallah next time we will meet with the next interesting concept. So till that, take care. Assalamu alaikum.